गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट्स। सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से शुभ संध्या। इट्स 7:30, सो लेट अस हैव आवर इवनिंग सेशन। संध्याकालीन प्रसारण की शुरुआत हम करते हैं, जिसमें एमसीक्यूज के माध्यम से प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा जीएस पेपर पर की तैयारी को सुनिश्चित करते हैं डियर एस्पिरेंट्स। और इसमें ऐसे प्रश्नों को हम लोग प्रस्तुत करते हैं जो संभवतः करंट अफेयर्स से नेशनल और इंटरनेशनल महत्व के होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और इसके साथ ही इतिहास से भी प्रश्न लेते हैं, भूगोल से भी प्रश्न लेते हैं, अर्थशास्त्र से भी प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न लेते हैं राजनीति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी से। इस प्रकार से एक समग्र रूप से हम आपकी तैयारी सुनिश्चित कराते हैं डियर एस्पिरेंट्स। आज लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई और इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री का संवाद हुआ, और उसके पश्चात ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर के रूप में एक सफल स्पीकर कहा जाएगा, 97% उनका डिलीवरी रेट रहा, 97%। तो यदि और राज्यसभा की हमें लगता है कि निश्चित काल के लिए 17% हो चुका होगा। तो ये जो राष्ट्र स्तर की जो स्थिति है इसका उस पर हमने एक आपके ये वस्तु स्पष्ट किया। अब आते हैं हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों की जो काफी महत्वपूर्ण है डियर एस्पिरेंट्स। हियर with reference to International Union for Conservation of Nature, consider the following statement. Dear aspirants, it is the world's oldest and largest global environmental organization. Nisha, good evening. Very good evening, Nisha. It was established in the year 1950, and its main objective is to conserve biodiversity in the world. How many of the above statements are correct? A only 1, B only 2, C only 3, and D none. Dear aspirants, the answer is B. 2 statements are correct. Dear aspirants, the third statement is correct. The first statement is correct, but the second statement, it was not established in the year 1950. So it's very remarkable situation. If you are preparing for UPSC type of examination, dear aspirants, you should be very much careful regarding the chronological, facts, the aesthetic facts, which I mean to say. So, the International Union for Conservation of Nature is the world's oldest and largest global environmental organization. It includes members from 1,300 government and non-governmental organizations and more than 15,000 volunteer experts from 185 countries. So statement 1 is correct. Established in 1948. So it was not established in 1950, dear aspirants, as the world's first global environmental organization. So you should note it down. This is very, very important. World's first global environmental organization, and I am very much hopeful, Nisha, you have noted it down. This is very important fact. So 185 countries, 15,000 volunteers, and 1,300 government, non-governmental organizations. So these are the statistics. Established in 1948 as the world's first global environmental organization. This organization is headquartered in Gland, G-L-A-N-D, Switzerland. Gland, Switzerland. IUCN is funded by governments, bilateral and multilateral agencies, foundations,
member organizations and corporations. So this is IUCN. You might have heard it. I am very much sure. International Union for Conservation of Nature. We are talking about IUCN, which was established in the year 1948, headquartered in Gland, Gland, Switzerland. Gland, Switzerland. The main objective of IUCN, this is important. What is the aim and objective? If you are writing note, preparing a brief note, because you have to write the mains examination. Aditya Jha, good evening, very good evening, happy birthday, wonderful Aditya. Yes, yes, yes. And आपका मुझे WhatsApp भी मिला, and I am very much happy that you are coming on the 14th, that is सरस्वती पूजा. तो काफी हर वर्ष की बात है, इस बार भी हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, और जब आप आएंगे तो एक नई उमंग होगी और नई बात होगी. तो काफी अच्छा लगा. आई रेड योर मैसेज और मैंने आपको जवाब भी दिया. वेरी गुड, नाइस. और आई एम होपफुल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी उसी ओज, उमंग, उत्साह के साथ जो आप यहाँ आते थे. तो मुझे हमेशा स्मृति में, मानस पटल में है कि यू हैव टू क्रैक यूपीएससी. सो इट हैज द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल ऑब्जर्वर इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि it has the hence statement 2 is not correct. The main objective of IUCN is to conserve biodiversity in the world. तो ये IUCN का पंच लाइन है. I miss you. Yes, yes. तो कोई घबराने की बात नहीं है. जिस साल आप अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि अभी तो आपका 11th या 10th कितना, कौन सा चल रहा होगा, 12th, आई थिंक 12th आपका चल रहा होगा या 11th. तो ये सब पूरा हो जाने दीजिए और ग्रेजुएशन हो जाने दीजिए, और उसके बाद का जो साल होगा वो पूरा का पूरा आप हमारे टच में रहेंगे, ऐसे लिखेंगे, और जो भी आपने सब्जेक्ट चुना है ऑप्शनल्स के लिए, तो उस पर भी हम लोग संवाद करेंगे. और यदि आपको समय मिलेगा तो यू विल स्टे विथ मी हियर. आपके पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे इनको हमारे यहाँ रहने दीजिए, और नहीं तो फिर पेरेंट्स के साथ भी रहेंगे. तो अभी तो काफी सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, जूम पे आपसे बात करेंगे और आपको गाइड करेंगे, मेंटोरशिप करेंगे. आप सर फर्स्ट ईयर, ओके फर्स्ट ईयर में है, वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है. सो वी वेर डिस्कसिंग IUCN. So dear aspirants, it demonstrates how biodiversity is fundamental to addressing the world's greatest challenges, such as climate change. World का challenge क्या है? Climate change, sustainable development and food security. IUCN is a neutral platform for governments. ये भी काफी important है. NGOs, scientists, entrepreneurs, and local communities to find practical solutions to conservation and development challenges. So, dear aspirants, our answer should be 2 statements out of the 3 statements. Dear aspirants, the second statement is not correct, just simply due to the fact that it has been mentioned in the question that IUCN, that is International Union for Conservation of Nature, was established in the year 1950, but actually it was established in the year 1948. Dear aspirants, I hope you have learned a lot. Okay, now here is another question, very important. The next question: which tree of Rajasthan is called forest fire? Okay, which tree of Rajasthan is called forest fire? Now the options: A. Palas, B. Teak, C.
blue Gulmohar, and D Kachnar. So, what should be the answer? Palas. Palas is called forest fire. Okay. So, this Palas is also known as wildfire. It is known as dhak or Palas. Palas flower has been declared the state flower of Uttar Pradesh. Hence, option A is correct. Now, with reference to uh, the only Palas is correct. So, dear aspirants, ये और पलास का झारखंड से भी सीधा संबंध है, आप जानते ही हैं. नाउ लेट अस हैव दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू स्वालबार्ड ग्लोबल सीड रिपोजिटरी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज एन आइलैंड ग्रुप ऑफ नॉर्वे लोकेटेड इन द आर्कटिक ओशन. Second statement, it was established by the government of Norway. Which of the statement above is are correct? A, one only, B, two only, C, both one and two, and D, neither one nor two. Dear aspirants, the answer to this MCQ is C, both the statements are correct. So, with reference to Svalbard, 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 Svalbard Global Seed Repository, SEED. Okay, it is an island group of Norway located in Arctic Ocean. This statement is correct, and it was established by the government of Norway. This statement is also correct. Dear aspirants, Global Seed Vault, the world's largest secure seed repository, was opened by Norwegian government in February 2008. Svalbard, Svalbard, is an island group of Norway located in the Arctic Ocean, located north of mainland Europe. This place is between continental Norway and the North Pole. So, statement 1 is correct, and Svalbard Global Seed Store was established by the government of Norway and is financed by Norway itself. The stockpile is supported by Food and Agriculture Organization of United Nations, FAO, and International Council. So, statement 2 is also correct. Dear aspirants, let us have another question, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इसके आगे का प्रश्न क्या होगा. सो देखें. डियर एस्पिरेंट्स, इसी तरह के प्रश्नों पर हम विचार करते हैं, और जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफी महत्वपूर्ण होते हैं. अभी आपने देखा इलेक्शन कमिश्नर, और चूंकि आम चुनाव होने वाला है तो ये पद काफी महत्वपूर्ण होगा. ईसी इलेक्शन कमीशन, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. आइए देखें एक प्रश्न. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया. Selection of election commissioners in India. We have 3 statements in this MCQ. Until now, the Ministry of Parliamentary Affairs short-listed candidates and the Prime Minister finalized the appointment, which was formally ratified by the President. Second statement, Supreme Court has called for a consultative process for the selection of election commissioners of India. And the third statement, Election Commission of India has always been a 3-member body since independence. A only 1, B only 2, C all 3, and D none. So, dear aspirants, our answer should be only one statement is correct. That is the second statement. Supreme Court has called for a consultative process for the selection of election commissioners of India. So the first statement, before a Supreme Court,
ruling, the executive led by the union government held the authority to appoint election commissioners. The law ministry curated a candidate shortlist from a pool of active and retired officers, with the prime minister making the final decision, ratified by the president. So, statement 1 is not correct. Not Ministry of Parliamentary Affairs, it is shortlisted by Law Ministry. Okay, the Law Ministry curated a candidate shortlist from a pool of active and retired officers, with the Prime Minister making the final decision, final selection. Now, the second statement is correct because on March 2nd, 2023, the Supreme Court mandated a consultative process for the appointments. This process involves the Prime Minister, okay, then Leader of Opposition, LOP, and Chief Justice of India. The third statement is also incorrect because originally established in 1950 with a single chief election commissioner, the commission transitioned to a three-member body in 1989. So it's not correct to say that Election Commission of India has always been a three-member body since independence. No. Okay. So originally it was a single chief election commissioner organization. Now the commission had transitioned to a three-member body in 1989, only to revert to a single commissioner temporarily before reinstating the three-member structure in 1993. So, dear aspirants, our answer is only one statement is correct, and that statement is statement 2. डियर एस्पिरेंट्स, अब आइए चले अगले प्रश्न की ओर, और यहां पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्टर मैग्नेट्स, ALTER, अल्टर मैग्नेट्स. We have three statements. This question relates to science and technology. Alter magnets defy convention, blending characteristics of antiferromagnets and ferromagnets with unique spin behavior. Second statement, they can be used to study spin caloritronics. और तीसरा, the crystal nudged effect, CNE, found in altermagnets arises from their unique magnetic properties. How many of the statements given above these are correct? A only one, B only two, C all three, and D none. Dear aspirants, our answer to this MCQ is all three statements are correct. Alter magnets, distinguished by their unique magnetic properties, challenge conventional classification by exhibiting traits of both antiferromagnets and ferromagnets. So statement 1 is correct. Now this duality arising from intricate atomic interactions within their crystal structure is pivotal in spin caloritronics, a field exploring spin heat interplay untenable with typical magnetic materials. So statement 2 is also correct. Let us examine the third statement, and here in this statement we have promising for information technologies, alter magnets exemplified by rubidium dioxide manifest phenomena like a crystal nudged and crystal thermal Hall effects. These observations shed light on their magnetic behavior, particularly the crystal nudged effect, under scoring the potential of alter magnets in advancing spin-based applications. So statement C is also correct.
our answer should be C. All three statements are correct. Now we have a question related to art and culture. Adi Mahotsav. Consider the following statements regarding Adi Mahotsav. Okay. We have two statements. Please concentrate, dear aspirants, and if it is possible, you should write in your notebook. The Adi Mahotsav, a yearly national tribal festival, has been celebrated since 2017. Second, it is a collaborative effort between the Ministry of Tribal Affairs and the Ministry of Cooperation. Which of the statement given above is correct? A, one only, B, two only, C, both one and two, and D, neither one nor two. So, dear aspirants, you have to examine and find out the answer. Statement 2 is not correct because, dear aspirants, scheduled for February 10th to 18th, परशुराम कुमार जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग परशुराम जी, कहाँ चले गए थे? काफी लेट हो रहा है, आपकी प्रतीक्षा में कर रहा था, कब आएंगे मेरे परशुराम जी? तो अब आ गए, तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई। और आज आदित्य झा और निशा पांडे ये दोनों हैं और काफी अच्छा लग रहा है ये देखकर। तो शेड्यूल फॉर February 10th to 18th 2024 the event fosters interaction, learning and empowerment within tribal communities। और ये स्थिति है, ये a collaborative effort between the Ministry of Tribal Affairs and Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, Tribe-Fed. Okay, so it is not Ministry of Cooperation. Okay, as written in the statement. Dear aspirants, it is collaborative effort between Ministry of Tribal Affairs and Ministry of Cooperation. No. Happy birthday. Yes, thank you परशुराम जी। 9 फरवरी को ही मेरा बर्थडे था, 9 फरवरी को ही, और 9 फरवरी की रात में मना और फिर 10 को जो है मैंने उसके पिक्चर पोस्ट किए आज, तो काफी लोग उत्साहित थे कि भाई बर्थडे का, तो बहुत अच्छा लगा। और इस बार तो काफी अच्छे ढंग से बच्चों ने, जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे थे, वो बड़े बच्चों को हमने छोड़ दिया था इस बार जो है नन्हे मुन्ने को ही बुलाया था, उनको काफी आनंद आता है। तो इस तरह से तो आपकी शुभकामना भी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। आदि महोत्सव इज एन एनुअल नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन 2017, showcases India's tribal culture, heritage and आर्टिसेनल प्रोडक्ट्स, ये है। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नहीं होगा, यहाँ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, दैट इज नोन एज ट्राइब-फेड। इट सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल आर्टिजन्स टू एक्सिबिट देयर टैलेंट एंड क्राफ्टमैनशिप। डियर एस्पिरेंट्स, तो ये है। और इस साल 10 से, आज ही से 18 फरवरी के बीच में ये इवेंट फोस्टर्स इंटरैक्शन, लर्निंग एंड एम्पावरमेंट विद इन ट्राइबल कम्युनिटीज। सो डियर एस्पिरेंट्स, वी हैव वन स्टेटमेंट, दैट इज ए शुड बी दी आंसर। इसका उत्तर ए होना चाहिए। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, और यहां पर प्रेसिजन मेजरमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेज एंड फील्ड्स। तो जीएस पेपर 3 हो गया, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न हो गया। हाई रिसोल्यूशन इमेजिंग एंड सेंसिंग ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो ये दूसरा स्टेटमेंट। और तीसरा, मॉडलिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स। और चौथा, implementation of processing tasks such as cryptography and networking,
डियर एस्पिरेंट्स, प्रेसिजन मेजरमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो इसके बारे में आपको बताना है, ये इसका उत्तर क्या होगा। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रा कोल्ड एटम्स। तो ये बिल्कुल आपके लिए नई बात होगी, इसको लिख लेना है, अल्ट्रा कोल्ड एटम्स। सो डियर एस्पिरेंट्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ध्यान देना होगा एक बार फिर से, प्रेसिजन मेजरमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेज एंड फील्ड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, हाई रिसोल्यूशन इमेजिंग एंड सेंसिंग ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा, मॉडलिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स। और चौथा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेसिंग टास्क सच एज क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्किंग। अब आपको बताना है क्या कि इनमें से कौन कौन, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर दी एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रा कोल्ड एटम्स। अल्ट्रा कोल्ड एटम्स इसमें से क्या है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। डियर एस्पिरेंट्स, तो यहाँ पे चारों के चारों ये सही हैं डियर एस्पिरेंट्स। और अल्ट्रा कोल्ड एटम्स हैव डाइवर्स एप्लीकेशंस। यहाँ पे हम आपको बताएंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग सपोर्ट्स टास्क्स लाइक क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्किंग। प्रेसिजन मेजरमेंट्स enhances precision in measuring constants and fields. और biological simulation aids in understanding biomolecular interactions. Sensing and imaging enables high resolution imaging of field, or cosmological simulation helps simulate complex cosmological phenomena. Material research models quantum materials like superconductors, or chemistry and dynamics studies chemical reactions and dynamics. Dear aspirants, our answer should be D. All four are correct. So, ultra cold atoms applications. The application of ultra cold atoms are all the four. Okay, all the four. डियर एस्पिरेंट्स, अब यहाँ पर आप देखें, एक प्रश्न और हम ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको पहचान करना है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। जो ये डिस्क्रिप्शन है उसको आपको पहचान करना है। द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट सी टर्टल्स। सी टर्टल्स आपने देखा होगा PYQs में भी। द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट सी टर्टल्स globally are primarily inhabitants of tropical and subtropical waters in the Pacific and Indian Oceans. Notably, countries like India, Mexico, and Costa Rica host significant nesting sites for these creatures. A distinctive behavior displayed by these turtles is the eribada, displayed by these turtles is eribada, typically occurring at night. Omnivorous in nature, their diet mainly consists of jellyfish, crust, ocean, and small fish. The above paragraph talks about which of the following? A. Asian box turtles. B. European pond turtle. C. Indian tent turtle. And D. Olive ridley turtle. तो ओलिव रिडले टर्टल इज द आंसर। इसमें आप आंसर लिख सकते हैं, ओलिव रिडले टर्टल। अब थोड़ी बहुत जानकारी ओलिव रिडले टर्टल के बारे में तो होना ही चाहिए। और क्या है ओलिव रिडले टर्टल? टर्टल कछुआ। द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट abundant sea turtles are known for their olive colored carapace. They exhibit mass nesting called eribada. मास नेस्टिंग को ही एरिबेडा कहा जाता है। एरिबेडा का स्पेलिंग बाबू ARRIBADA, एरिबेडा, where
थाउजेंड्स ले एग्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम बीच। हजारों हजार की संख्या में कछुआ अपना अंडा देते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। दे एग्जिबिट मास नेस्टिंग कॉल्ड एरिबेटा, where thousands lay eggs simultaneously on the same beach. Found in Pacific, Atlantic, and Indian Oceans, Odisha's Garimatha Marine Sanctuary hosts the world's largest rookery, 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 or listed as vulnerable on the IUCN Red List and under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. So, dear aspirants, अब इसके बारे में हमने आपको काफी इम्पोर्टेंट से बताया, और यहाँ ये भी आपको जानना होगा, एक ऑपरेशन है ऑपरेशन ओलिविया, OLIVIA, इंडियन कोस्ट गार्ड्स एनुअल ऑपरेशन प्रोटेक्ट्स टर्टल्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग, और दूसरा है मैंडेटरी टेट्स, ओडिशा मैंडेट्स ट्रॉल्स टू यूज टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल टर्टल डेथ्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और टर्टल्स आर टैग्ड टू मॉनिटर मूवमेंट्स एंड प्रोटेक्ट हैबिटेट्स। तो ये था आज का हमारा प्रश्नों का, लगभग हमने 10 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए, आपके साथ एक्सप्लेन किए। निश्चित रूप से आपने काफी कुछ सीखा और इसे हृदयंगम किया और इसे नोट भी किया। डियर एस्पिरेंट्स, आधे घंटे का ये सफर यहीं पे हम समाप्त करेंगे, लेकिन कल फिर 7:30 बजे आपके साथ होंगे। कल हम कुछ विशेष करने वाले हैं, तो आप निश्चित रूप से 7:30 बजे संध्या हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। सो 7:30 is the time of your preparation. 7:30 is the time of your cracking UPSC. वो जो आपका सपना है, जो जुनून है, जिसके लिए जज्बाती आप हो गए हैं, तो होना भी चाहिए। तो अब इसके बाद तो बिल्कुल विजय ही विजय है। तो शुभकामना देते हैं, आपकी तैयारी इसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ चलती रहे। ऐसे का टॉपिक क्लास के बाद बस 10-15 मिनट में आपको जाएगा। कल जरूर से उसका प्रैक्टिस करेंगे और मंडे को उसे दिखाएंगे। डियर एस्पिरेंट्स, सिविल सर्विसेज एकेडमी में सरस्वती पूजा होगी 14 तारीख को। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, विनम्र आमंत्रित हैं। 10:30 बजे आरती होगी, तो तब तक आप निश्चित रूप से आ जाएंगे। तो इसी के साथ आज का ये हम लोग कक्षा की समाप्ति करेंगे, और उसके पहले गुड नाइट, बाय बाय।